Dear students, now we are going to discuss about the environmental audit of hazardous waste. Environmental audit term, we are familiar with this term, environmental audit. As I told you that we are familiar with this term, environmental audit. If you remember, in second year we discussed about the Environmental Protection Act and environmental impact assessment. When we are talking about the environmental impact assessment, this assessment has done by the environmental audit. Just like that, when we are going to consider about the management of any waste, then we discuss about the environmental audit of this management. Why environmental audit is important? Like in other rules we mentioned that either we are talking about the e-waste management rule or construction demolition management rule or hazardous waste management rule. We always discussed about the some procedure, authorization, form 1, form 2, form 3 and so on. So how it could be governed? It could be governed by the environmental audit. So now we are going to discuss the audit procedure and what is the main objective of environmental audit. In simple way, environmental audit emphasize the customer, producer, manufacturer or a bulk consumer who have to follow all the rule regulations related with the generation to disposal strictly. So we can say that by the legislation we can follow the management of hazardous waste, because the hazardous waste is so much crucial for the life of living body. So now potential liability to a waste generator comes not only from lack of compliances with local regulation or laws, it may also include long-term contamination of the soil, groundwater, surface water, which remains after a facility goes into a receivership or liquidation or has a major accident. Like we always discuss that in earlier manner, why we always discuss about the waste management, because waste management is very potential to cause danger to the environment, like soil, groundwater, surface water. And how it contaminated? When leachate produces during the decomposition of the waste, and this leachate percolate into the water, soil, then it will going to be contaminated. Now the word is coming which is always used in this in this lecture: trademark status document retrieval. The goal of TSDR audit is to detect liability of waste generator by evaluating the TSDR facilities it uses for waste disposal. ये फैसिलिटी कहाँ पे यूज़ हो रही है? ट्रेडमार्क स्टेटस डॉक्यूमेंट रिट्रीवल. ये सारे उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथराइजेशन को देखेगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले हज़ारत वेस्ट में बताया था कॉपी 1, कॉपी 2, फॉर्म 3 की. तो जस्ट लाइक दैट सारे डॉक्यूमेंट्स के रिट्रीवल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, दैट इज़ कॉल्ड TSDR. The auditor must consider carefully the facility, its environmental setting, the management control, training programs and procedures it has established to control the treatment and disposal of hazardous material. Now the purpose of audit procedure is described applies to all type of waste disposal operation in all countries, since the principle of good waste management do not vary. ऐसा नहीं है कि TSDR अगर यहाँ पे ऐसा है तो कहीं US में कहीं और होगा. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, TSDR has originated by the US. So TSDR is a common international platform by which we can govern the management of
hazardous waste, right? Now we are coming towards the procedure. So the first thing is that pre-audit preparation. Before visiting the TSDR, the auditor should gather background information on the facility, like the material which is going to produced as a hazardous, that is the waste is halogenated, non-halogenated metal like mercury, cadmium, lead and chromium, organic chemicals, it is toxic or not, it is reactive or not, it is corrosive or not, it is carcinogenic or not. So all the, before starting of the audit, we have an idea about that, the what type of hazardous waste is going to emitted from that manufacturer or producers, like, and the waste is strong acids, bases could be reacted in large quantities, come in contact with each and other causing major reactions, and cyanides, which is as we know that cyanide is too much toxic and it is life threatening. Strong poisons such as pesticides, herbicides. So before starting the auditing, we have an idea about that how much careful in we have to be during all the procedures. So the second thing is that the site assessment. If you remember, we always discussed in environmental impact assessment EIA, there is two things we discussed in procedure. The first thing was the site selection, and the second thing is what is the project going to be considered. So just like that, यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले हमने प्रोजेक्ट यानी कौन सा hazardous waste हमको इस environmental audit के थ्रू ये इंश्योर करना है कि ये इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, एंड द सेकेंड इज दैट वेयर वी हैव टू डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटी. So that is coming in category of site assessment. So an efficient inspection often begins with a general oral review with plant management of TSDR organization, background, environmental permitting and resource photographs help record condition at the TSDR and the nature of the surroundings neighborhood for future users of the assessment. In some cases, however, the TSDR management will not allow on site photographing. अगर ऐसी जगहों पर जहाँ पे कि साइट फोटोग्राफिंग क्यों अलाउ नहीं की जाती, क्योंकि जब इनकी फ़ोटोग्राफी की जाती है, अगर वो वेस्ट बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत कार्सिनोजेनिक है, तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द साइट, द ऑडिटर मस्ट कैरेक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़. कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे कि ऑडिटर साइट के असेसमेंट के लिए काम करता है. साइट हिस्ट्री, साइट फॉर व्हाट, साइट फॉर डिस्पोजल, वेस्ट रिसिप्ट एंड एनालिसिस, हैंडलिंग एंड ट्रांसफ़र, कंटेनर स्टोरेज ऑपरेशन, टैंक्स एंड पाइपिंग, ऑन साइट टेक्नोलॉजी लाइक इट इज़ लैंड फिलिंग, ट्रीटमेंट, इंसिनरेशन, what type of technology we are going to use for the disposal purpose. Residues management, the residues यानी the waste material which is not recycled, which is not disposed, that is called residues management. So such type of management, how you are going to manage that waste which is not recycled, which is not disposed, that is most important, because if you are not going to treat it, that waste, it could be harmful for the environment. Environmental setting, environmental setting means what is the condition of soil over there, what is the condition of air, atmosphere over there, what is the condition of groundwater table over there. If you are going to landfilling and the groundwater table is so much near towards the surface of the earth, then it could be problematic, because the leachate can percolate into the water, groundwater, and can contaminate the groundwater, which could be harmful for the vicinity of the people. So management system, closures and corrective actions, what type of actions, as we know that in environmental assessment management, EIA assessment, we always discussed about three things.
what is the merit of that project, what is the demerit of that product, and how to solve the demerit of that product which could be become merit of that product. मतलब कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है, और नुकसान को कितना मिनिमाइज़ कर दें कि आपके फ़ायदे के लेवल को वो और ज़्यादा बढ़ा दे. तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर्स एंड करेक्टिव एक्शंस. पब्लिक रिलेशंस. Why public relation is important? There is some authority who is responsible for the public relations, because public is the direct body who is going to govern or who is going to be highly impacted by that activity. Now regulatory compliances and financial aspects. So these are the, and what is the factor we have to discuss in it. साइट हिस्ट्री, वो हिस्ट्री कैसी है, वो साइट कैसी है, क्योंकि अगर मान लो साइट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि द साइट कुड बी वेरी फ्रेजाइल, इट कुड बी सेंसिटिव जोन मीन्स इको फ्रेजाइल, वी कैन से दैट. इट कुड बी अर्थक्वेक जोन. सो it could be related any conflict related to politics, conflict related to owner of that land. So these are the things which should be discussed in the site history. जैसे कि हम अपना काम अगर शुरू करें तो साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट? वेस्ट एनालिसिस, रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड कीपिंग. सो द वेस्ट एनालिसिस इज व्हाट? The goal is to determine if the facility fully understand the waste which is receive and accept. हमको अगर जो वेस्ट हम रिसीव करने जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से एनालिसिस पता होगी कि वो किस तरीके का वेस्ट है, उसको हमको कैसे हैंडल करना है, क्या केमिकल उसमें है, किसकी रिकवरी हो सकती है, किसकी रिकवरी नहीं हो सकती. तो द हैंडलिंग ऑफ दैट वेस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी. द सैम्पल ऑफ वेस्ट शुड बी स्क्रीन्ड बिफोर shipment to determine the compatibility with the process. If any characteristic of the waste affect the success of the treatment of the disposal process, then acceptance range should be defined. कि किस रेंज तक का, सपोज कि हमने कहा कि ये वेस्ट कार्सिनोजेनिक है, बट हाउ मच, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ कार्सिनोजेनिक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द रेंज शुड बी प्रोवाइडेड कि इतने से इतने % तक टॉक्सिसिटी होगी तो हम इसको कार्सिनोजेनिक कह रहे हैं या टॉक्सिक कह रहे हैं. अगर इस रेंज तक ये वेस्ट है तब तो ये हैंडल किया जाएगा, अगर इस रेंज से बाहर है तो इसको हैंडल नहीं किया जाएगा. फेल्योर ऑफ ए फैसिलिटी टू दिस मीन्स दैट दे मे एक्सेप्ट वेस्ट विच आर इनअप्रोप्रिएट फॉर देयर प्रोसेस. अगर इसमें से तुमको आपको लगता है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, आपने जो एक स्टैंडर्ड बना के दिया है उसके बीच में डेटा आपको नहीं मिल रहा है, देन यू कैन डिस्कार्ड दैट वेस्ट. So now each waste treatment or disposal technique has its own critical set of parameters, because these are so process specific. When we are going to incinerate the disposal waste, then the parameters would be different, and when we are going to landfilling that waste, then the parameter would be different. So while there are many factors affecting the quality of the waste analysis, such as equipments, quality assurance, quality control, employee training, and other initial indication of these parameters is the laboratory housekeeping. A good laboratory will exhibit most of the following characteristics: well organized counters with space to work, organized storage, organized fumes hood areas, eye wash and safety equipments, sign indicating the need for protective equipments, कि ये इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव होना चाहिए, इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल होना चाहिए, एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन कोड्स. सो दीज आर द, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट वेस्ट रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड कीपिंग. In most countries, manifesting or using detailed bills of lading it is required to establish that is TSDR has received a waste from a जनरेटर से रिसीव, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ऐसे वेस्ट का, तो जो जनरेटर होता है, जो ऑक्यूपायर होता है, वो वहाँ से लेके और डिस्पोजल तक की एक रिसिप्ट बनती है, जिससे कि हम डेटा को एक तरीके से रिकॉर्ड बना सकते हैं
कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, कितना रिसाइकल हुआ और कितना डिस्पोज हुआ, क्योंकि इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह पे कितना वेस्ट जनरेशन हो रहा है और कितना उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. द TSDR शुड कीप अ लॉग or other record of the waste received. It should be cross reference to the waste analysis. ठीक. Now the handling and transfer container and tank storage. Handling and transfer is what? So in addition to the general requirements discussed above, several addition factors apply to handling and transfer operation of various type. क्या क्या ट्रांसफ़र के लिए ध्यान देना होगा कि फॉर पाइपलाइन ट्रांसफ़र, ये जो पाइप ट्रांसफ़र हो रहा है वो पाइपलाइन है. फॉर फोर्क लिफ्ट ऑपरेशन, इसको फोर्क के थ्रू लिफ्ट किया जा रहा है. अगर पाइपलाइन है तो अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं. इफ़ इट इज़ फोर्क लिफ्टिंग देन द इक्विपमेंट और द मशीनरी विच इज़ यूजेस फॉर द लिफ्टिंग ऑफ दैट वेस्ट दैट शुड बी वेल equipped. And if we are discussing about the pipeline transfer, the use of drip pans, vacuum fittings or check valves is strongly recommended. If good handling and transfer areas usually show most of the following characteristics. क्या क्या characteristic होनी चाहिए? Spills are cleaned immediately. अगर spills होती भी है तो इसको immediately clean किया जाए. Operations are organized with well defined activity and traffic. Activities areas are marked with sign to guide employee work habits. Spill cleanup equipment. Spillage is obvious and widespread and the area is cluttered and disorganized activities takes place all over the sites. हमें इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि लीकेज सीपेज होगी ही, बट वो लीकेज सीपेज किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट ना करे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर एंड इट्स अनदर पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.